Hello, I am Bola Kumar Yadav. I cleared JEE Main exam, and on the basis of JEE Main cutoff and scores, I got the college in the Punjab, Gani Jail Singh Engineering College Technology, Bhatinda. After that, after completed my BTech in Punjab. I started completed the GATE exam, and I cleared the GATE exam twice, and on the basis of GATE score I got the IIT Patna. Right now I am here. I am pursuing the MTech degree, and this is my last semester, the fourth semester, and my specialization is thermal and fluid science, which is the part of mechanical engineering. So I will discuss today. I will discuss the some portion of air conditioning, which is comes into the part of RAC, refrigeration and air conditioning, which is also a part of GATE syllabus. So I will discuss first. I will discuss the VCRS cycle, vapor compression refrigeration system. So this diagram I have already drawn for for time management. So this is vapor compression refrigeration system. In this vapor compression refrigeration system, there are four components are present. First is evaporator, second is compressor, third is condenser, and the fourth is expansion device. So the heart of this VCRS cycles is called compressor, because the compressor is the most important component in the VCRS cycle or any air conditioning system. So what happened in this? So first I started from point 1. So at the one point, the gaseous state of the refrigerant are present. There are many type of refrigerant which is used in the air conditioning system. So mainly R22, and you cannot say R22. There are many type of refrigerant. So if you suppose the R22, so R22 refrigerant are in at the point of 1, it is present in the gaseous state. So this gas is compressed by the compressor, and it reaches onto the point 2. Their temperature and pressure are very high. So after reaching the point 2, it delivered into the condenser. What is the task of condenser? Condenser just abstract the heat from the refrigerant and exerted into the environment. So at the constant pressure. So at constant pressure, it just cool the refrigerant. After that, it comes on the point 3, and after 3 point, it expansion device are present, throttle. This throttle, and after throttling, it converted into again liquids, and this liquid goes into the evaporator. Evaporator is a channel, something you cylindrical channel or something shapes. So first suck the air in air conditioning. If we talk about air conditioning, so air conditioning, you can see in the air conditioning fan, and just it abstract the heat from our room, and it exerted onto this condenser evaporator, and after bombard, its air absorb the air from the environment, and it just bombarded onto the evaporator. So air lose its latent heat and get colder. After reaching its latent heat, it becomes colder, and this cold air is exhausted into our air conditioning environment. So so this is the overall process of what happened in the VCRS cycle. First, this is the evaporator just cool the air by gaining the latent heat from the air, and the compressor is just compress the gases. Evaporator is release the heat to environment at constant pressure, and at third point, expansion is happen by the help of throttling. There are many types of throttling device. So after throttling, the temperature difference between the condenser and the evaporator, temperature difference is around 30 to 40 degrees Celsius. If we take example, if the
temperature of at the point 3 is 30 degrees Celsius. So after expansion, the temperature of the point 4 is minus 10 degree. You can say 40 degree difference. So the temperature difference, you can also why somebody if ask why compressor are used, increases the temperature, and then after that it go to condenser used for releasing it. So the temperature difference is comes 30 to 40 degree due to the compressing gas. If you don't compress the gas, you cannot drastically decrease their temperature. For example, if I just thrown my mouth air in slow velocity, I feel on my hand it will feel like just hotter air. But when compress the air in my mouth and after compressing I release, I feel colder. So if you compress the gases and after compressor you expand, so after expansion their temperature will decrease drastically. So that's why compressor are used. First we compress, and that compressor after compressor it expand. So after expansion, if you suppose their temperature is 30 degrees Celsius, so at that point it will comes minus 10 degrees Celsius. So this is happen only because of compression. Because if you more compress the gas and after compression you release, just expand. If you will expand, then its temperature will decrease drastically. So this is overview of the BCRS cycle. So after that I will discuss some portion of air. So basically air is contain two parts. First is dry air or second is water vapor. In dry air, nitrogen are present 79% and oxygen are present 21%. So it is a combination of nitrogen and oxygen. So moist air, this is not air, this is moist air. Moist air is a combination of dry air and water vapor. Second point is dry bulb temperature. So dry bulb temperature is simple temperature of the dry air measured by the thermometer, and the wet bulb temperature is the temperature of the moist air, which is measured by the thermometer, but its bulb are covered with wet cloth. If the thermometer bulb are covered with the wet cloth, so the temperature measured by this thermometer is called wet bulb temperature. Suppose dry bulb, if I suppose I want to measure this room temperature. So room temperature, I kept this both thermometer in the room, and first is open air, just bulb of the first thermometer is in open air, and second the bulb of the thermometer is covered by the wet cloth. So it suppose it measure 5 degree and it measure 4 degree. 4 degree. So temperature difference is 1 degree, but the environment are same. The temperature measured by the both thermometer is different. Why? Because the temperature their bulb are covered with the wet cloth. So that what does it mean, this 1 degree temperature difference? We all using in the winter summer season desert cooler. So desert cooler are basically decrease the temperature if you compare the surrounding air. So what does it mean? अगर ये 1 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस है, इसका मतलब ये हो गया कि मैं जो आउटसाइड एयर है, जो आउटसाइड एयर हाउ मच टाइम्स आई डिक्रीज द टेम्परेचर from outside air if we are using desert cooler. So by the help of desert cooler you decrease the outside air temperature by 1 degree. If the temperature difference between the dry bulb temperature or wet bulb temperature is suppose 3 degree, suppose dry bulb temperature measure 5 degree and wet bulb measure temperature is 2 degree, so difference is 3 degree. So what does mean by 3 degree? 3 डिग्री मीन्स ये हुआ कि जो आउटसाइड का एयर का टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को आप विद द हेल्प ऑफ डेजर्ट कूलर, विद द हेल्प ऑफ डेजर्ट कूलर वी डिक्रीज 3 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस.
इसका मतलब ये हो गया। तो जितना ज़्यादा ड्राई बल्ब और वेट बल्ब टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा हमारा कूलर इफेक्टिव वर्क करेगा, हमको टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा मिलेगा। अगर वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्राई बल्ब टेम्परेचर सेम शो कर रहा है, इसका मतलब आप डेजर्ट कूलर को यूज करना व्यर्थ है। मतलब डेजर्ट कूलर को आप यूज करोगे लेकिन आपको उतने कोई उससे कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि टेम्परेचर जो आउटसाइड एयर है वही टेम्परेचर तुमको रूम में मिलेगा। लेकिन जो अगर ड्राई बल्ब और वेट बल्ब टेम्परेचर का डिफरेंस ज़्यादा है, इसका मतलब if you compare the outside air and room air, you will feel or you will find out the temperature difference both outside and inside is 2 degree 3 degree or whatever the temperature difference is shown in the this two thermometer. So this is the dry bulb temperature, wet bulb temperature. So one another term is specific humidity, omega. What is specific humidity? Specific humidity is the ratio of water vapor present in एयर पर केजी ऑफ ड्राई एयर। मतलब यूनिट क्वांटिटी ऑफ ड्राई एयर कितना वाटर वेपर कंटेन कर रहा है, ये हमारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बताता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 5। रिलेटिव ह्यूमिडिटी व्हाट डज मीन बाय रिलेटिव ह्यूमिडिटी? इट इज द रेशियो ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन प्रेजेंट केस डिवाइडेड बाय वाटर वेपर प्रेजेंट व्हेन दिस एयर विल गेट सैचुरेटेड। सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब ये हो गया कि प्रेजेंट केस में कितना वाटर वेपर है, और जब ये एयर सैचुरेट हो जाएगा उस समय उसमें कितना वाटर वेपर होगा, दोनों का रेशियो बताता है ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सपोज मैंने एक एग्जांपल दिया कि इफ द 5 इज 53%, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा मॉइस्ट एयर है ये 47% वाटर वेपर और एब्जॉर्ब कर सकता है। सपोज अभी के टाइम पर द राइट टाइम इज अभी द टाइम रिसेंटली शोन इन द वॉच इज 12:07। अगर हम 12:07 पर ये 53% दिखा रहा है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होगा अर्थ का, वैसे वैसे वो जो है ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ता जाएगा, और रात के समय जो है ना ये पहुंच जाएगा आपको 60% या 70%। तो 60 या 70% जब पहुंच जाएगा, इसका मतलब ये हो गया, अगर 70% है इसका मतलब ये हो गया कि इसमें 70% वाटर वेपर आ चुका है, 30% और ये वाटर वेपर एब्जॉर्ब कर सकता है, इसका मतलब ये हो गया। उसके बाद आता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। आई विल डिस्कस वन मोर पॉइंट विच इज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है कि सपोज कोई एयर यहाँ पे इस साइड जो अपना ये ग्राफ है जो ये सेपरेट कर रहा है, ये है सैचुरेटेड कर्व ऑफ द बिटवीन द वेपर एंड लिक्विड प्लस वेपर रीजन, एंड दिस इज लिक्विड रीजन, दिस इज क्रिटिकल पॉइंट। सो अगर कोई एयर यहाँ पे है, एयर में एक्चुअली क्या है, जैसे अभी सन है तो वो एनर्जी रिलीज करता है, अर्थ उससे हॉट हो गया, अभी ये अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा है, जैसे वो शाम के समय होता है तो अर्थ डिसअपियर हो जाता है, तो उस समय कोई हीट सोर्स प्रोवाइड नहीं करता है अर्थ को, तो उस समय अर्थ क्या होता है अपना टेम्परेचर डिक्रीज करना, टेम्परेचर जो होता है अर्थ का कोल्ड हो जाता है, तो अर्थ के सराउंडिंग में जो एयर है वो उस एयर को इफेक्ट करेगा, मतलब उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, क्योंकि रात के समय कोई रेडिएशन सोर्स है नहीं, मतलब सन डिसअपियर है, तो टेम्परेचर जो है अर्थ का लो है, तो अर्थ के कांटेक्ट में सबसे लेयर के ऊपर में एयर है, तो वो एयर को इफेक्ट करेगा, वो दूसरे एयर को इफेक्ट करेगा, ऐसे कर करके पूरा इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो टेम्परेचर डिक्रीज कौन करता है? अर्थ करता है, क्योंकि अर्थ कोल्ड हो चुका है, और जैसे जैसे रात के समय होता है वो धीरे धीरे जो है वो कोल्ड होते रहता है, तो वो जब अर्थ कोल्ड होगा तो उसके कांटेक्ट में जो एयर है वो कोल्ड होगा, उसके अपर लेयर कोल्ड होगा, वो होते होते पूरा इन्वायरमेंट जो होता है वो क्या हो जाता है? कोल्डर हो जाता है। तो सपोज कोई एयर यहाँ पे है, तो इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर द ग्राफ विल बी कम्स एंड दिस इज द if you suppose this is the TS diagram, so their temperature will decrease and at a point it will comes onto the saturated curve। अगर इसके बाद भी अर्थ का टेम्परेचर डाउन होता है तो वो कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे इस रीजन में लिक्विड प्लस वेपर, और उसके बाद भी टेम्परेचर डाउन हो गया तो वो पूरा का पूरा
लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कर्व ये बताता है कि ड्यू पॉइंट में समझा रहा था, तो ड्यू पॉइंट इज द टेम्परेचर एट द पॉइंट टेम्परेचर एट विच द एयर विल बी गेट स्टार्ट कंडेंसेशन। Condensation will start the temperature at which the air will get start condensing. That point of temperature is called dew point temperature. ठीक है।